Now go to the next slide. This is another aspect that I would like to highlight. It is not only the military funding and prosecution. Now the information wing, the information arm of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists and this fitna al Hindustan and fitna al Khawarij. आपको मैं इसकी सिर्फ चंद मसाले देता हूँ, and you being in media will be able to recognize it very quickly. The first example is of Mianwali base attack, which is on 4th November 2023. A day before, the Indian social media posts, tomorrow is a big day, so going to bed early. And then in the morning, it says good morning Mianwali. ये आपने देखी होगी पहले भी. So there is the information prong. और फिर ऊपर इसका ये क्लिप देखें जब वो वाकया होता है मियांवाली का, तो how the Indian media, social media, electronic media plays up and glorifies this act of terrorism. चलाइएगा जरा. And a news from neighboring Pakistan, which has reported yet another terror attack. Its Mianwali training airbase was attacked by terrorists. Exclusive input coming in from Pakistan, where TJP has attacked PAF Mianwali base. The TJP had entered the base and attacked and have damaged more than 40 fighter planes. Now, Pakistan is reeling under the spate of terror attacks. From Balochistan to Khyber Pakhtunkhwa and even Punjab, chaos has gripped the country of Pakistan. Pakistan, where Mianwali air base was attacked. Now, आगे आप ये देखें कि 6 अक्टूबर 2024 को हमारे चाइनीज दोस्तों के ऊपर कराची में अटैक होता है. उससे पहले इंडिया का सोशल मीडिया के जो उनके रॉ से जुड़े अकाउंट है, रॉ एफिलेटेड अकाउंट है, दे स्टार्ट क्लेमिंग बिकॉज दे आर वही तो वहां से प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, वहीं से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वहीं से कहा जा रहा है, वहीं से सारी प्लानिंग हो रही है, तो वो पहले पोस्ट कर देते हैं, कहते हैं बिग डे इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स. और फिर जैसे ही होता है तो देयर मीडिया एंड सोशल मीडिया स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट कि जी हमने चाइनीज को हिट कर दिया कराची में. देन यू सॉ दैट सेम थिंग हैपनिंग ऑन 11th मार्च इन जाफर एक्सप्रेस कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस होता है उससे पहले वो कहते हैं कीप एन आई ऑन पाकिस्तान टुडे एंड टुमारो. फिर वो कहते हैं दी रोड टू पीस इन बलोचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर. और उसके बाद जब होता है तो देयर होल मीडिया इज सेलिब्रेटिंग दिस एक्ट ऑफ बार्बरिज्म, दिस हाईजैकिंग ऑफ ट्रेन. पूरी दुनिया इसे कंडेम कर रही है और इंडिया का मीडिया, सोशल मीडिया और वहां की पॉलिटिकल एलीट ऐसे है जैसे वहां पे कोई ईद का दिन हो गया. ये आपको जो नेक्सस है ऑफ देयर इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग नजर आ रहा है, सबको दुनिया को नजर आ रहा है, ये नहीं आ रहा कि ये फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज का हिंदुस्तान से जो गठजोड़ है, फॉर एनी कॉमन सेंस आप सामने रखें, आपको नजर आ रहा है. आगे जाइएगा. ये खुजदार का वाकया, इसमें भी अभी आप इस लिंकेज को देखिएगा. नेक्स्ट जाए. सुबह ये वाकया होता है एंड हाउ द इंडियन मीडिया, आगे चलिएगा, ये जरा देखते जाइएगा कि उनका मीडिया, सोशल मीडिया इस खुजदार के हिनियस कावर्डली अटैक पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. देखिएगा. 7:58 AM, 8:05 AM, 8:07 AM, these are all Indian accounts जो कि रॉ और एफिलेटेड ये लोग इनके लिए, BLA के लिए, फितना अल हिंदुस्तान के लिए चला रहे हैं. 8:35, 8:45, they're all reporting धमाका हो गया, बच्चे हो गए, शहीद हो गए, मर गए, आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी. और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन कर जाता है. बलूचिस्तान में मिलिट्री स्कूल बस पर हमला हुआ है. हमले में 5 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. क्वेटा कराची हाईवे पर मिलिट्री स्कूल बस पर यह अटैक हुआ. बलूचिस्तान के खुजदार कस्बे के पास ये अटैक हुआ है. इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे जब ये धमाका हुआ उसके बाद पूरे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए और एम्बुलेंसेस जो है वो वहां पर जा रही थी ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके. और जिस तरीके से हो रहा है ये अपने आप में
बताता है कि पाकिस्तानी सेना का जो इस वक्त मोराल क्या होगा. An explosion has been reported targeting a Pakistan Army bus near Kuzda Zero Point in Balochistan, and we're also getting in reports of mass casualties. And local sources say that a bus that was leaving from the Kent region carrying Pakistani military personnel. یہ کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ سیلیبریٹ کرتا ہے دہشت گردوں کے ایکٹس کو, جو ان کو اس طرح خوشی سے رپورٹ کر رہا ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو دکھا نہیں رہا. اس کے بعد ان کے آتے ہیں تجزیہ کار, ان کے آتے ہیں ریٹائرڈ فوجی, ان کے آتے ہیں پالیٹیشنز, ان کے آتے ہیں سیکورٹی انالسٹ, اینڈ دے آر تھمپنگ دیئر چیسٹ. دس از دی سیم میڈیا, دس از دی سیم پولیٹیکل ایلیٹ that on the night of 6th and 7th, 40 innocent civilians died, including 22 women and children, and they are still claiming as if they have done a great deed. Never, I think, in the history of modern history, you have seen any nation, any media, any government celebrating killing of children and women the way they are celebrating. This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. Next جائیے, یہ one of the proxy of one of the arms of this fitna al Hindustan. This is on 11th May. اس کو دیکھیے گا یہ کیا کہہ رہا ہے. They issued a press release. I have highlighted the important parts for your consideration. They say, Fitna al Hindustan, what does it say? If we receive political, diplomatic and defense support from India. What is defense? Military support, equipment. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. کس منہ سے کہتے ہیں آپ کا تعلق نہیں ہے؟ نیچے پڑھیں, وہ کہتے ہیں we assure India to attack from the western border, کہ آپ جب escalation کریں گے, that if we assure India that if it makes the final decision to eliminate the state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from western border. We will become its, کس کا؟ انڈیا کا practical and military arm. 11 مئی کو یہ را انڈیا ان سے یہ پریس ریلیز کرواتا ہے. کیوں کرواتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ ڈٹر نہیں ہو رہی ان سے. وہ میزائل مارتے ہیں, وہ ڈرون بھیجتے ہیں, وہ حملہ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کا ریزالو نہیں گر رہا. اس کی آرمڈ فورسز جو سی ہیں وہ سینہ کھول کے, سینہ ٹھوک کے کھڑی ہیں. Because we made a promise, our ancestors, our forefathers made a promise that we will safeguard the territorial integrity, sovereignty and honor of Pakistan at all cost. تو وہ اس کو لگاتے ہیں کہ تم اور یہ کہو کہ جی ہم تمہارے ساتھ مل کے ہوں گے. تو وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ یہ 13 لاکھ کی انڈین آرمی ہمیں کورس نہیں کر سکتی, ڈٹر نہیں کر سکتی, تو یہ جو ان کا فتنہ ہندوستان ہے, ان کی ان پریس ریلیزوں سے, ان حرکتوں سے, ان بزدلوں سے, ان بزدلانہ کاروائیوں سے ہم کا ڈٹر ہو جائیں گے.